जनाब. So 0 0 0 0 0 1 and 1 1 1 1. Okay. मेरा कैंडिडेट नंबर चेंज हो गया. लेट्स से आ जाओ भाई. सो अच्छा, पहले पेपर ज़्यादा, पहला क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, तो पहले मैं खुद ही ट्राई कर लेता हूँ. सही है. So they're saying use a definition of the work done to show that. Okay. So if they're saying show that, you have to show each and everything, right? So use the definition of work done. So work done is force times displacement, right? Where force is kg meter second negative 2. तुम्हें ये सब शो करना होगा. ओके. डिस्प्लेसमेंट इन मीटर. सही है. एंड वर्क डन, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा kg meter squared second negative 2, right? And okay fine. हो अबे लो, ये तो मैं शो करना पड़ेगा ना. Send force which is in kg and second negative 2, right? You also have to show the multiplication, although it work if you don't, but please show each and everything, right? And negative 2, fine. अच्छा जी, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि कितना कह रहे हैं. Okay. So they're saying work. Acha. So they're writing down the thing, or they're also accepting the word form, the formula form, and then you have to show this step and then the answer. Okay. अच्छा, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी देख लेते. शो दैट वाले क्वेश्चन आर वेरी सेंसिटिव. ओके. So that's why this question was generally well answered. Majority of the country were able to derive the correct unit for the energy definition. A small minority ignored the instruction given in the question to use an equation based on the definition of the work done and instead use an expression for power or kinetic energy. Okay. So like you cannot use power times time or kinetic energy for that for the work done, right? क्योंकि दोनों के यूनिट जूल्स हैं, तो आप कोई भी यूज नहीं कर सकते. ओके. सो फाइन. Now you have the potential difference. Okay. So, as anybody know the definition of potential difference? Anyone? Yes. Sir, energy transferred per time per unit per Per second. unit. Oi. Potential difference. Potential difference has a formula W is equals V equals to W equal Work to. done movement a unit charge plus a component. Good, 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 good. Fine. समझ रहे हो ना रेहान? So it is a work done per unit charge. Okay, to move it through the component. Okay. And you can also add on the energy conversion. Okay. So since the charges are moving through the resistor or through any component, so it previously have the electrical energy which will be converted into other form, right? So you can also mention ke, the energy convert from, or the work done from electrical to other form per unit charge in moving the charge throughout the component, right? इसकी definition को वो देख लेते हैं. Okay, they're saying work done or energy transferred per unit charge. So bracket लगी हुई है, which mean if you want to write you can, if you don't you can just ignore. But यहाँ पे देख लेते हैं. A common mistake was to define the potential difference in terms of energy transferred by unit charge. Okay, energy transferred by unit charge or by 1 coulomb without referring to divide the energy by charge. Okay, so you cannot write energy transferred by the unit charge, you have to write energy transferred per unit charge. Okay. So, and in general, candidate correctly understood that the potential difference involved the energy involved the transfer of the electrical energy to the other form of energy. Some candidate gave no response or any equation involving potential difference such as current or resistance. Okay, fine. ये सब चीजें नीचे रहेंगी. चलो भाई आ जाओ. Use the SI based unit for the resistance. Show your working. Determine the SI. Okay, fine. So for the resistance, you can use V equals to IR. Okay, and we know that the voltage is equals to work done over charge. Okay. And we have the formula for work done, which is kg meter squared second negative 2, and charge is in AS.
सही है, charge is in AS, okay, so AS सही हो गया. सो वोल्टेज का आपके पास जो यूनिट आएगा दैट वुड बी केजी मीटर स्क्वायर्ड सेकेंड -3 A -1, राइट. सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इन राइट हेयर फॉर द रेजिस्टेंस. I don't get C for that, for charge. दोबारा दोबारा ब्रो, बहुत दूर से आवाज आ रही है आपकी. ये आवाज नहीं आ रही. मेरी नहीं आ रही, अबे आपकी भी नहीं आ रही. अब आ रही है. यस, मैं कह रहा था अब सीख नहीं ले रहे फॉर चार्ज. कूलम इज नॉट द बेस यूनिट ब्रो, समझ रहे हो ना. ओके, सही. सो जब ये एम्पेयर ऊपर जाएगा, सो इट बिकम kg meter squared second -3 A -2. Bro, please keep in mind when they're asking you to show your working, you have to show this thing, and also this thing, and this whole thing, right? You have to mention each and everything in a show that question, क्योंकि show that question के लिए जो 3 मार्क हैं ये बेसिकली 4 मार्क है, ओके. एंड तो इस वजह से, राइट. तो बी केयरफुल. मैं जरा इसकी तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट दिखाता हूँ. They are saying, wait, question I, अच्छा ये question 2 होना चाहिए. Okay. A significant number of well-prepared candidates were able to produce a correct solution. The majority of the candidates were able to start with an expression for the resistance. Candidate who started with R is equals to P over I square were generally more successful than those who started with R equals to VI. Some candidate incorrectly consider the coulombs as the base unit. Yusuf सुन रहे हो ना यूसुफ? Okay, जी जी. so there were a number of errors made, such as cancelling a as a numerator with negative a as in the denominator. Okay, मतलब like आप इसको कुछ बच्चों ने इसको इससे cancel किया, but this is not possible. Okay. They are also saying that the candidate who used this equation as a starting point or found difficulty in solving or in finding the correct form, right? But you should know that कि अगर तुम ये वाली चीज यूज कर रहे हो then आपको वहां तक कैसे पहुंचना है, right? Or you can also use power is equals to I square R. हाँ जी, क्या बोलते हो भाई यूसुफ, क्या बोल रहे हो, बोलो कुछ बोल रहे हो. सर आप यहाँ पे आप साइड में थोड़ी सी बोले सकते हैं बेस यूनिट ताकि बस कंफ्यूजन नहीं हो फिर उसके बाद. बेस यूनिट, ओके. बेसिकली वी हैव 5 बेस यूनिट ना. तो लेंथ का मीटर है, सही है. एंड टाइम का सेकंड है, सही ओके. है. एंड मास का किलोग्राम है, नॉट ग्राम. ओके. किलोग्राम, सही है. एंड वी हैव टेम्परेचर का केल्विन है, केल्विन, केल्विन, ओके. एंड वी हैव इलेक्ट्रिकल करंट का एम्पियर है, सही है. रिप्रेजेंटेड बाय एम एस के जी एंड कैपिटल के एंड ए कैपिटल ए, ओके, दैट्स इट. इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे ड्राइव यूनिट हैं, वो आपको वो करना पड़ेगा. सही है, चलो. आज भी कौन रीड करेगा? गुलमीरा से कर लेते हैं. गुलमीरा, प्लीज रीड द क्वेश्चन यार. A stone is thrown vertically upwards. Variation with time t of the displacement s of the stone is shown in figure 2.1. ओके. अच्छा, बाय द वे बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, अगर आप इस ग्राफ को एनालाइज करो, कैन यू टेल. ओके, इन्होंने कहा द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हिच मीन लेट्स से दिस इज द स्टोन and you are throwing it vertically upward. Okay, you are throwing it vertically upward. Okay, and this is a point. Okay, this is first point, this is second point, this is third point, and this is fourth point. Okay, 4 point है. Can you अच्छा, अगर मैं इसका वेरिएशन बता दूं, लेट्स से ये ऊपर गया होगा मे बी, सही है, मैक्सिमम हाइट तक उसने रीच किया होगा, देन इट मे टेक द यू टर्न, राइट. एंड देन इट कम बैक टू द सेम पोजीशन, सही है. देन इट मे कंटिन्यू इट्स पाथ right down. So okay, so can you tell me, let's say this is A, this is B, this is C, and this is D. Okay, so can you tell me कि A B C D कहाँ कहाँ पे होंगे? हाँ जी. Sir, sorry, background noise ज़्यादा है. क्या रहे है? पहला वाला A होगा. पहला वाला you are saying A, okay fine.
और डी वो नीचे की तरफ वाला होगा. ये वाला पॉइंट. Hmm. Okay, good. And then B is gonna be the peak, and C is gonna be the last one left. Here or here? सर शुरू में. इधर नहीं, इधर नहीं होगा, इधर होगा. सही हो गया. अच्छा देखो बेसिकली हो क्या रहा है. सो व्हेन यू आर लॉन्चिंग द स्टोन, so the stone should have some initial velocity, so that's why the initial gradient is not zero. Okay, so the initial by the way, this is a displacement time graph. Okay, so initial velocity of the stone is this is the initial position at A, right? And when it reaches the maximum height, it is at point B. Okay, and point C basically shows that your displacement is again reaches to zero, which means the distance the stone travel upward, it traveled the same distance downward, and it is at the same position where it started, right? So C should be the point from where it launched. Okay, and then जो point D है, that is like further down, right, or below the launching position of A, right? क्योंकि वो आपको जो है थोड़ा सा और ये हो गया. सही है. चलो परफेक्ट हो गया. सही हो गया. Now, okay. अच्छा, by the way, Gulmina, if we have given the displacement time graph, so इसका gradient मुझे क्या बताएगा और इसका एरिया मुझे क्या बताएगा? ग्रेडियंट स्पीड बताएगा और एरिया कुछ नहीं बताएगा. वेरी गुड. सही. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सो बी केयरफुल. यहाँ पे आप स्पीड बल्कि ना कहो, वेलोसिटी कह दो, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. ओके, एंड एरिया जो है कुछ भी नहीं बता रहा, नथिंग. सही है. सही है. चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. हमने ग्राफ एनालाइज कर लिया. नाउ बैक टू द क्वेश्चन. यस. अच्छा, एक one more thing to tell you. Acha, by the way, at this point, the stone reaches the maximum height, and this distance or this time is basically 1.5 second, I think, 1.25 second, 1.25 second. Okay, so basically from here till it reaches the maximum height, it takes 1.1.25 seconds. Okay, and from this point downward till point C, it takes a time of I think 2 point, I think 2, I think 2, और या ये वाला पूरा जो टाइम है वो आपके पास बन रहा है वो 1.75 का बन रहा है. 1.75 का बनना चाहिए कुछ, बिकॉज दिस इज 1.25 एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट विद 3 यू विल गेट आई थिंक 1.75. यस. अच्छा जी, चलो. आ जाओ भाई. चलें अब ये कर लो भाई, जल्दी जल्दी करते हैं. Use figure 2.1 to describe without calculation the speed of the stone from time 0 to time 3 seconds. ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड कि स्पीड जो है वो ग्रेडियंट से बदल रही है. यस, क्या कहोगे आप? Sir, the speed increases from rest नॉट इंक्रीजेस, कम ऑन, till. हाउ? इंक्रीज क्यों बोल रहे हो? ग्रेडियंट क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर आप Oh, ग्रेडियंट हाँ देखो, हाँ, sorry. वो इसका decrease होगा. हाँ, वेरी गुड. तो स्पीड, आपने बेसिकली एक मैक्सिमम या एक हायर वैल्यू ऑफ स्पीड से लॉन्च किया था, एंड फ्रॉम दैट हायर वैल्यू द स्पीड decreases to zero till this point, and then increases in the opposite direction, right? And till 3.3, 3 डायरेक्शन. सही है, 3, बस ये आप कह दोगे. सही हो गया. 2 नंबर है, ज़्यादा लिखना भी नहीं है, राइट? सो हम कह सकते हैं कि भाई the object is projected with some initial velocity. सही है. um, which decreases to zero. You have to code the time as well. Okay, which decreases to zero at t equals to 1.25 seconds. Okay, um, as the gradient is zero. Okay, as the gradient is zero. Gradient is zero. सही हो गया. And then
it increases in the opposite direction. फाइन। चलो, अच्छा इसकी जरा जल्दी से देख लेते हैं मार्किंग की। द ऑब्जेक्ट स्पीड डिक्रीजेज, स्टोन डिसेलरेट, ओके, स्पीड देन इंक्रीजेज, एक्सेलरेट, नो, बस इतना लिख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। ब्रो यस, वरना वरना फिर आपको, अगर आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो वो फिर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो आपको वेलोसिटी बता रहे हैं ना, राइट? तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को वही नहीं कर रहे तो इसका मतलब यू आर रीडिंग, यू आर मिस रीडिंग, या यू आर incompletely reading the displacement time graph, like you are just skipping the direction, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हो, समझ रहे हो आप? यस। अच्छा जी, look. So there were a significant number of answers. The significant number of answers that suggested that the candidate had not read or realized that the graph represent the displacement against time. Their answers seems to describe a velocity against time graph, suggesting that they wouldn't benefit from more careful reading of the question. Okay. The description given by some candidate also seemed to ignore that the graph represent a stone that had been thrown vertically upward. The description suggested that the stone had constant velocity for the first and last part of the last of his path. The significant number of answers suggested that at time t equals to 0, the speed was 0, and then at time t equals to 0, speed is not 0, okay? Because displacement time graph hai, and the gradient of displacement time graph gives the velocity, okay? And the speed was 0, and that the speed then increases but was 0 at the maximum height, okay? Speed is not increasing, okay? The gradient is not increasing, the gradient is decreasing. So throughout the motion speed decreases because we have the deceleration of 9.81, right? So that's why. And the description of the speed were often not related to the correct times, okay? You have to give the time in your answer, okay? Therefore the credit was not awarded, okay? Also please keep in mind, when the question says कि भाई without use the graph to describe the motion from this time to that time, you always have to include the time values and the corresponding y-axis value if it is the velocity value or displacement value, right? So or if sometimes they say do the quantitative analysis of the motion, then you have to include the quantities, the figures, the values in your answer, right? Otherwise you won't get full mark, okay? सो बी वेरी केयरफुल। क्लियर हो गया? चलो आगे आ जाओ। गुलमेज़ सर रीड कर लो प्लीज। Assume air resistance is negligible and therefore the stone has constant acceleration. Calculate for the stone the speed at 3 seconds. ओके, क्या करेंगे? अच्छा, अगर आप ये वाला मोशन कंसिडर करो, ये साइड वाला, ये वाला मोशन, दिस मोशन, ओके? सो वी नो दैट एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो है। वी नो दैट द स्टोन टेक्स 1.75 seconds to reach point D, right? We also know that the gravity is 9.81, okay, downward, okay? So आप समझ रहे हो ना? जी sir. सही है। सो इनिशियल स्पीड इज जीरो, राइट, बिकॉज वो मैक्सिमम हाइट है। देखो जब भी ग्राफ तुम्हें दिया हो ना काइनेमैटिक्स का ग्राफ, ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू मोशन, ओके? ये मोशन की तुम एक इलस्ट्रेशन बना लो कि ऊपर इतने टाइम में जा रहा है एंड इट्स कमिंग डाउनवर्ड इन दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? सो दैट वे इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू एनालाइज इट, ओके? सो अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होता है वरना, सही है। सो इनिशियल स्पीड आ गई है, एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है 9.81 की, सही है। टाइम इज 1.75, ओके? एंड आपने क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है, फाइनल स्पीड। अल्लाहु अकबर। सो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ए इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी, सही है। ए इज़ 9.81, टी इज़ 1.75, इज इक्वल्स टू वी, कितना आता है? 17.2. 17.2। चलो आगे आ जाओ। अच्छा बाय द वे इसने कहा हुआ था, अच्छा द स्पीड कही हुई थी, सही है, आ जाओ आगे आ जाओ। The distance traveled from time 0 to time 3 seconds. अच्छा अगर डिस्टेंस ट्रेवल है तो इसका मतलब है जो ऊपर जा रहा है, you have to consider that distance, and the distance from the maximum height till downward, yeah, or you also have to consider that distance, yes? सही हो गया। तो ऊपर जो जा रहा है वो ऊपर आके पास जा रहा है। अच्छा अगर हम देख लें कि भाई अगर
मूविंग अप के लिए हमारे पास जो है ना फाइनल वेलोसिटी जीरो है, सही है। टाइम हमारे पास है 1.25 का, एक्सेलरेशन हमारे पास है -9.81 की, सही है। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, राइट, एंड वी आल्सो डोंट नो द डिस्प्लेसमेंट इट कवर्स बिकॉज इन्होंने एक्सिस पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, वाई एक्सिस पे, ओके। सो वी कैन यूज एस इज इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर। So S would be minus Vt goes to 0 and minus 1 over 2 A is -9.81 and T is the squared value which is 1.25 squared. Okay. How much? सर सॉरी आवाज आ रही है? आ रही टेंशन नहीं लो यार। ठीक है सर 7.66 7.66 fine. So this is the distance the ball take to move to the maximum height and जब वो moving down है, when it's मूविंग डाउन, सो इनिशियल स्पीड अब जीरो है, सही है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली स्पीड जीरो हुई है, सही है। एंड मूविंग अप के लिए हमने 9.81 नेगेटिव में लिया था, यहाँ पे इनिशियल स्पीड जीरो है, सही है। फाइनल स्पीड वी जस्ट कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस पार्ट एज बीइंग 17.2। एक्सेलरेशन हमारे पास है पॉजिटिव 9.81। टाइम हमारे पास है 1.5 1 पॉइंट, सॉरी, टाइम हमारे पास है 1.75 1.75 एंड अच्छा इनिशियल स्पीड जीरो है, सही है। टाइम हमारे पास है 1.75, सही, एक्सेलरेशन है 9.81, सही है। एंड अगर हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लें, सो विल गेट कितना आएगा, यू टी जीरो हो जाएगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, 1/2 इंटू 9.81, सही है, इंटू हाउ मच, 1.75 का स्क्वायर एंड दैट इज द एस, ओके। कितना आता है? 15 15 एग्जैक्ट? नहीं सर 15.021 आ रहा है। चलो फाइन, दोनों को ऐड कर लो, 15.02 प्लस 7.66 बिकॉज वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस। 22.7 22.7, ओके, नाउ यू कैन राइट 22.7 और 23, दोनों एक्सेप्टेबल है। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट के लिए वी जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, ओके। सो 15.02 माइनस 7.66, हाउ मच? सॉरी सर 7.36 7.36 और 7.4, फाइन। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बता सकती हो? 7.36, यस, डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड वाला जी सर डिस्टेंस ज़्यादा है। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ओके फाइन। अच्छा जी, इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं मार्किंग की से। वी आर गेटिंग 15, कहाँ है आंसर, कहाँ है? बे? अच्छा ओके, 22.7, 23, 22.69 और 26 सब सब एक्सेप्टेबल है। एंड डाउन एंड सही है, सही है, सही है, सही है, ओके। अच्छा जी, आ जाओ। अच्छा अगर जल्दी से अगर हम एक दफ़ा ना इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट गो थ्रू कर लें जल्दी से। The majority of the candidates were awarded credit for the initial equation, but many candidates could not be awarded further credit because they assumed the initial velocity was zero and used the total time for 3 seconds in their calculation. A stronger candidate produce well presented correct solution. Okay, this was for the first part. यहाँ पे हमारे पास टाइम जो था वो 1.25 था, right? एंड नाउ दिस इज, अच्छा फिर ये डिस्प्लेसमेंट का है पार्ट बी, एंड पार्ट थ्री जो है वो पार्ट सेकंड पार्ट जो है वो डिस्टेंस का है, थर्ड पार्ट डिस्प्लेसमेंट का है, ओके। मैनी कैंडिडेट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस इन वन कैलकुलेशन यूजिंग वन इक्वेशन ऑफ मोशन। These candidates did not realize that the equation of motion gave them the displacement always, okay. So if you put the time value and if you put the acceleration and everything, you will always get the displacement. Okay, equation of motion will equation of motions are designed to give you the displacement. They will not give you any distance. Okay, so displacement and could not give them the total distance traveled in 3 seconds.
Many of these candidates also assume the velocity was 0 at t equals to 0 and t equals to 2.5. Okay, at t equals to 0 is not 0, at t equals to 2.5 is not again 0, because उस point पे displacement 0 is starting points, right? The more able candidate give the values for the known quantities at each of the three stages and generally complete the calculation successfully. Find the use of g was less common than the previous series. Okay, अच्छा जैसे ये वाला भी देख लेते हैं, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली. मैनी कैंडिडेट फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द ग्राफ एंड इन्फॉर्म information given to obtain the correct answer, and also found this part difficult. These candidates were unable to interpret the displacement time graph and were not able to distinguish between the distance and the displacement. Candidate for calculation in part B involving the displacement for the three stages were usually able to calculate the correct displacement. Majority of the candidates realized the displacement was downward. Many weaker candidates who were able to calculate. Okay. अच्छा देखो याद रखो, वो तुमसे बोल रहा है कि भाई तुमने ग्राफ, हमने जो ग्राफ नहीं यूज़ किया, हमने डायरेक्ट पीछे वाली क्वांटिटी से माइनस कर दिया. तो दे आर सेइंग कि भाई कैंडिडेट ने ग्राफ यूज़ किया या नहीं यूज़ किया, एंड उन्होंने फिर तीन चीज़ों के बारे में बात की हुई है कि भाई तीन स्टेजेस हैं, तीन स्टेज की डिस्प्लेसमेंट सही निकाली या नहीं निकाली. सही है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज. ओके, एंड दिस इज द सेकंड स्टेज. ओके, एंड दिस इज द थर्ड स्टेज. ओके. ओके, सो अगर तो तुमने इन तमाम के पॉइंट्स या टाइम सही लिए, देन यू विल गेट द करेक्ट मार्क्स. ओके, एंड नहीं लिए, देन यू विल लूज सम मार्क. ओके. अच्छा जी, आगे आ जाओ प्लीज. On figure 2.2, draw the variation in time t of the velocity v of the stone from time t0 to time 3 seconds. हम्म. अच्छा, बहुत सिंपल से ग्राफ है. ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी वर्टिकल मोशन होगा ग्राफ हमेशा यूं बनता है. ओके, और जब भी बाउंसिंग होती है तो ग्राफ यूं बनता है. ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड. सही है. सो we don't have y-axis plotted, so we don't have to worry about the exact quantities, right? The exact values. But we should be worry, or we should be careful that the starting velocity should be lesser than the ending velocity, right? Because जो बॉल है, जो ऑब्जेक्ट है, it traveled more distance in the downward direction than in the vertical direction or in the upward direction, right? So उसकी final velocity जो होगी, that should be greater than उसकी initial velocity, right? So अच्छा, and by the way it cuts the x axis at 1.5, और जहाँ पे उसकी maximum height है, so the object reaches maximum height at 1.25, so which is this one. Okay, so let's say मैं यहाँ से बनाता हूँ ग्राफ इधर से, let's say, and I have to make sure. अच्छा जी, Okay, so this is 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3. Okay, so 1, nope, this is not acceptable. Okay, so हम इसको थोड़ा सा और कर लें. Okay, this works. Okay, because vertically upward जो है वो we have two box, one big box and half one small box. Okay, we have over here we have two big boxes. Okay, so this work. Okay, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है ना, कम ऑन पिक हो जा, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी स्मॉलर देन द फाइनल वेलोसिटी. ओके, दैट्स इट. इतना पता होना चाहिए तुम्हें. चलो, और तुम्हारे पास जो एक्सेस को कट करेगा, दैट शुड बी एट टाइम t इक्वल्स टू 1.2. चलो आ जाओ. जस्ट देयर वर मेनी करेक्ट आंसर फॉर द कैंडिडेट हु हैड गेन क्रेडिट इन बी. These candidates produce a velocity time graph with a constant negative gradient throughout, because we have 9.81. Through as shown, understanding of the motions of stone. Okay, 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 fine. चलो. Okay, Yusuf, please read the question यार. यूसुफ जिंदा बैठे हो? But I'm really bad at this मोमेंट में या फिर रीडिंग में? moment. कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, डोंट वरी. A rod PQ is attached at P to a vertical wall as shown in figure 3.1. The length of the rod is 1.6 meters. The weight W of the rod at 0.64 meters from P. The rod is kept horizontal and in equilibrium by a wire attached to Q and to the wall at R.
The wire provides a force F on the rod of 44 newtons at 30 degrees to the horizontal. अच्छा A. जी, Take एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब देखो, सबसे पहले देखो, क्वेश्चन पे जाने से पहले ना, पहले क्वेश्चन को एनालाइज, जो इन्होंने कहानी दे रखी है ना, उसको एनालाइज कर लो। सही। सो इन्होंने हमें ये पिवट दिया हुआ है। सही है, ओके फाइन। इन्होंने हमें एक फोर्स दी हुई है एफ, तो प्रॉब्ली वो उसकी कंपोनेंट तो जरूर बनवा लेगा। सही है, तो एक हो जाएगा एफ में भी, बना लेते हैं। सो एक हमारे पास होना चाहिए एफ, क्या होगा भाई, कॉस होगा, साइन होगा? सॉरी, Sin 30, sin theta, साइन थीटा। या अगर चलो 30 ले रहे हो, तो एफ आपके 33. पास है 40, है 44 है। सही है। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल होगा। सही है। सो 44 कॉस 30, ओके, ये आपके पास आ गया। सही है। 44 का आंसर है। Okay, four star. 44 इज गिवन है इन द क्वेश्चन। अच्छा, देयर सेइंग द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले तो भाई, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या दो चीजें आती हैं? यस, इक्विलिब्रियम का। No resultant force, no resultant movement, no गुड। resultant force. सो इक्विलिब्रियम के अंदर आप कह रहे हो कि भाई नो एफ आर एंड नो टी आर, ओके, नो रिजल्टेंट मोमेंट, नो रिजल्टेंट टॉर्क, फाइन। अच्छा जी, नाउ यू कैन सी दैट एफ साइन, अच्छा दिस इज द पिवट, पिवट भी दिख रहा है, पिवट भी मेंशन है, राइट? ओके, pivot is mentioned, right? You can see that we have this force weight जो कि इधर मूव करा रहा है, and we have this vertical force जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, राइट? एंड वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये जो है ना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे होंगे, राइट? उसका मोमेंट का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे होंगे, राइट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोमेंट नहीं है, ओके फाइन। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी हैव दिस फोर्स विच मे बी अनबैलेंस्ड, और विच शुड बी बैलेंस्ड फ्रॉम द पिवट और समथिंग, राइट? तो ये कुछ हमारे पास होना चाहिए। सही है। सो अब आपके पास एक रफ सा आ गया जहन में। सही है। सो अब आपसे कह रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दो, 44 साइन 30 22 आ जाएगा। सही है, आगे आ जाओ। हॉरिजॉन्टल 44 कॉस 30, कॉस 30 38. 28 38. 38, ओके, आगे आ जाओ। Okay. By taking moments about P, determine the weight W of the rod. अच्छा, नाउ बाय टेकिंग द मोमेंट अबाउट पी मींस कि ये पी आपको पिवट बोल दिया उसने, राइट? चलो। तो अच्छा इतना जी, आसान होगी। ओके। अच्छा, ये बस सुनते रहो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज आ रहा है। सही है। ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट? एंड द क्लॉकवाइज मूवमेंट, अच्छा हम यहाँ पे कह रहे थे कि भाई इट्स इन इक्विलिब्रियम। सो देखो, क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ ना प्रॉपर करके दिखाते हैं। सही है। सो सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो सम ऑफ clockwise moment should be equal to sum of anti-clockwise moment, clockwise moment। सही हो गया। Now clockwise moment is due to the weight W which is acting at a distance of 0.64, okay, 0.64, okay, and is equals to the other force is F sine 30 which is 22, and this is at a distance from the pivot, तुमने लेने होते सारे distance from the pivot, always keep in mind। सही है। So it should be 96 plus 6 0.96 plus 0.64, okay। So 20 22 and into 0.96 plus 0.64, okay। So यहाँ से weight निकाल लो। Okay, 0.64, फाइन। कितना बनता है भाई? Okay, I am getting 55, I am getting 55 straight forward से था। I am getting yes 55 आगे, चलो। आज रीड कर सकते हो भाई? Hmm. Explain why the wall must exert a force on the rod at P. इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। देखो, उसने क्वेश्चन के अंदर, अच्छा कोई आइडिया बाय द वे? यस, अच्छा, एनी आइडिया? P is the pivot. Um,
Why the wall must exert a force. To देखो hold उसने it? कहा हुआ है, सॉरी बोलो बोलो बोलो। To hold it? Mm, देखो उसने not कहा हुआ sure. है, उसने कहा हुआ है कि द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? सो Yes. अब अगर आप देखो the weight you calculated the weight as 55, okay? So the downward force is 55, the upward force is only 22, okay? Yes, which means Yes. अगर आप देखो the resultant force is not zero, right? The resultant force in the vertical direction is not zero, right? And also the resultant force in the horizontal direction is also not zero because you have 44 cos 30 acting horizontally, okay? So to balance Mm, these two forces out, the pivot or the wall should exert some amount of force, right, to cancel out, to make the resultant force zero. Okay, is that clear? क्या ये बात समझ में आती है? this and that. तो ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट होता है, बहुत मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है ये क्वेश्चन, राइट? एंड इसके अंदर ये वाला पार्ट लाजमी आता है, राइट? कोई एक फोर्स देगा, आपको बोल देगा कि भाई ये क्यों वो है, इसमें क्यों ये लग रहा है, राइट? सो यू ऑलवेज हैव टू मेंशन कि भाई ओके रिजल्टेंट मोमेंट जो है ना वो जीरो नहीं हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो रही होती, ओके? सो वी कैन से दैट कि भाई द vertical force is not balanced, okay, and horizontal force is not balanced, okay, is not balanced. So um, wall should apply some force to make the resultant zero. Okay, is that clear? Yes. Resultant zero. चलो ये आगे आ जाओ। Draw an arrow to represent the force acting on the rod at P. Label your arrow with the letter S. Action. At P. So अच्छा जी, सही हो गया, क्या करोगे? I'll make an arrow going above, like making it like go up. Like this? देखो I was फोर्स thinking एनालाइज like करो, फोर्स एनालाइज करो, फोर्स एनालाइज करो। देखो you have you have some force 22 minus 55 force acting downward, okay, and you have some force is acting in this direction, right? also resulting become like in wait between. अबे wait सुन तो ले। सही है, so these are the two Uh, forces, so इनका resultant इस direction में act कर रहा होगा, right? So to balance yes. this resultant out, the wall must exert the force exactly in the opposite direction यहाँ पे, right, in order to cancel out the effect of these two forces. Clear हो रहा है? Yes. Zero. So हम ये कह सकते हैं कि भाई it should, and it should be more toward the vertical, okay, and ये आगे पास आ गया resultant का। सही है, ये हमने कहा S, ये रहा। सही है। और अच्छा जी, देख लेते हैं इसकी मार्किंग की भी चेक करते हैं, एग्जामिनर भी, एग्जामिनर क्या कह रहे हैं। सो लाइन फ्रॉम P इन द डायरेक्शन टुवर्ड द पॉइंट Y वर्टिकली अबव W in direction upward, okay? अच्छा जी, लाइन फ्रॉम P एंड डायरेक्शन टुवर्ड वर्टिकली अबव, हाँ सही है, हमने ये किया हुआ है। एंड अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखें, सो 44 or F, okay, majority of the candidate equilibrium gives general statement of the Newton's third law reference to a specific problem, okay. The majority of the candidate were incorrect. अच्छा, सी के अंदर जहाँ पे हमने लिखा है कि भाई फोर्सेस बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट रेफर्ड ओनली द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम और गेव द जनरल स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ। So ये reference to the specific problem was required in order to gain full credit, okay? Like you have to relate the laws and the concept with the given scenario, okay? So tab you'll get the full mark, okay? The majority of the candidate will gain credit describe the need to balance the horizontal component of F. Very few candidates refer to the imbalanced vertical forces, okay? I do. And the last part was
The majority of the candidate incorrectly drew the horizontal or vertical arrow. A candidate should be advised that if the instruction in the question is to draw on a particular figure, then it is important to do this. Okay, credit could not be awarded if the arrow was not on the figure 3.1. Okay, so तुम्हें जो है तुम्हें बस इस चीज़ का ध्यान में रखना है. ओके, कि अगर तुम्हें जो है ना वो अगर तुम्हें लाइक इन्होंने कहा है कि ऑन द फिगर 3.1 बनाओ. सो यू हैव टू ड्रॉ द एरो इन दिस फिगर, राइट, सो दैट दे विल हैव द आइडिया वेयर यू आर एक्चुअली वांट टू ड्रॉ और वेयर यू आर एक्चुअली वांट टू ड्रॉ फ्रॉम. ओके, तो ये है. चलो खैर. फाइन, आ जाओ भाई. लेट्स ट्राई दिस वन. ओके, अच्छा, दिस इज द मोमेंटम क्वेश्चन. दे हैव गिवन यू द मास. Sir, बोलो बोलो. sir, I have another class. Can I go? ओके ओके, सही है. सो So mass given a okay and fine. They're saying find the calculate the change in momentum of the okay. They're saying rebound. Okay, rebound के अंदर you have to make sure that the initial velocity and the final velocity just changes the direction. Okay, so change in momentum is equals to mv minus mu. Okay, and so final velocity and initial velocity you can consider the negative sign with anyone, but you should have to consider. Okay, so 6.64 exponent negative 27. So you get and 1250 plus 1250. Okay, I am adding because we have two sign, one for the direction and one for the change. Okay, just calculate the value please. 64 exponent negative 27 into 2 time into 250, 2500. Okay, so this will give you how much? 1.66 into 10 to the power minus 23. Okay, 1.66 exponent negative 23. Fine. So why can't we do, I have a question. So why can't we Uh-huh. do 6.6 into 10 to the power minus 27 into 1250? Then minus, and then minus 1250 into You 6.64 can into also 10 to do the power that. minus. उसमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, बट उसमें जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. क्लियर? बस उसमें कोई मसला नहीं है, बट यू हैव टू शो लाइक जो जनरल सेंस होना चाहिए वो कैलकुलेशन का आना चाहिए. ओके, सॉरी एडिशन का आना चाहिए, अदरवाइज उसमें फिर ना वो मार्क कटेगा. सही है, चलो. अच्छा जी, these are not the part of the syllabus anymore. Okay, आ जाओ भाई इरफान. Are you there? Yeah. Okay, please read the On question. figure 5.1, sketch the temperature characteristic of a thermistor. Okay, do you remember the characteristic of the thermistor? As the temperature increases, the resistance decreases, I think. Very good. So they're basically inversely related. Yeah, like that. Perfect. Okay, please move on. A potential divider circuit is shown in figure 5.2. The battery of electromotive force 12 volt and negligible internal resistance is connected in series with resistor X, Y, and thermistor Z. The resistance of Y is 15 kilo ohms, and the resistance of Z at a particular temperature is 3 kilo ohms. The PD across Y is 8 volts. Explain why the power transformed in the battery equals the total power transformed in X, Y, and Z. Mm-hmm. Any idea? Like whatever the power the battery has, it's giving everything what it has to these three resistors. Okay, no power loss, nothing. Any suggestion? Why is that so? No idea. No internal resistance. Okay, so if you have the internal resistance, some voltage will be lost. Okay, and the remaining voltage drop across these three components. Right? Fine. Chalo. Okay, please move on. So they're saying the current in the battery. Okay, so you know that. Um,
So for the current in the battery, you either have the total resistance of the whole circuit, and you have given the total voltage of the circuit. You divide, you'll get the current directly. But they didn't give you they didn't give you the total resistance. Okay. But yes, they have given you the resistance of Y and its, the corresponding voltage drop. Okay. So we can use V equals to IR, V equals to IR, and the voltage across is it 8, and its resistance is 15 exponent 3. Sahi hai? So what's the current? 8 ones are 8. 1 point something something over. Anybody calculating? Exponent 3. I am getting 5.33 exponent negative 4. Okay. So 5.3 exponent negative 4. So this is the current basically. This is the current that flow through Y, and since the whole thing is in series, no loop, nothing, and no junction, so that's why no parallel. So the current remains the same. Okay. Now now they're saying calculate the resistance of X. Okay, resistance of X. Doesn't it change in series? Sorry, Doesn't the PD change throughout the series circuit? the potential difference. Yes, it changed for the series circuit So why do you think 8 over 15 then? because they told you that the potential difference across Y is 8. So out of 12, 8 is dropped across this Y, and the remaining 4 will combinedly drop across these two resistors, right? And obviously बात है कि 8 तो अब सेम रहेगा ना, जो भी ड्रॉप हो रहा है वो तो सेम रहेगा, राइट? वो तो फर्दर वेरी नहीं करेगा. Yes, if it varies when the resistance of the Z varies, okay? समझो? But for now, Yes. we are just working at 3K resistance, okay? So the resistance of X, find the resistance of X. So for that, we use V equals to IR. Mhm. And the total voltage is 12. The total current is 5.3333 exponent negative 3, negative 4. And the total resistance should be X plus 15K plus 3K. Okay. And just divide that by, okay. So 12 divided by 1.533 exponent negative 4. Okay. And then subtracted with 18,000. Okay. And this will give you the X. कितना आता है भाई? 12 divided by answer. I'm getting this much minus 18,000. So I'm getting 4,500. Okay, exact. I'm getting 4,641. Okay, I think you just use 5.33. I think, so that's why. Yes, I use the exact value, so that's why I'm getting that answer. Okay, let me show you. Let me see. 46, na? So 0.533 2 point. No, bro. I think you're getting wrong because they also didn't show that much variation. They're just saying 4.2 experience fee or 45,000. Okay, clear? Yeah. क्या what's the problem in your calculation, by the way? Did you find out the problem? Yes. Not yet? I don't. Uh, I'm not sure. I don't think I took the correct value for this. No, even though if you take 12 divided by 5.33 exponent negative 4, and if you subtract it 18,000, so I am also getting, I take 10, okay, 4451.07. Okay, I'm getting that value. It should be around 45. Okay, 4514.07. 4514. Yes. Okay. Yeah, that's right. Okay, fine. Okay, please read on. The temperature of Z is increased. State and explain the effect of the potential difference across Z. Okay, across Z. Okay. So if the temperature increase, the resistance will increase or decrease? Decrease. So the
potential difference will decrease, I think. Okay, very good. So if the temperature increase, resistance decreases, and hence PD also decrease. Okay. Potential hence Z decreased. Okay. But इन्होंने बहुत लंबी की हुई है. Resistance decrease, hence the current in circuit is greater. PD across X is greater. Okay, let me see if the marking, if the examiner wants all of this then. Okay. There were very few correct answers. Majority of the answers says that will be more. Okay, sorry. The stronger candidates realized that the current would be increased owing to the decrease in the resistance of the thermistor. More common, a more common but incorrect answer was to relate the decrease in the resistance with a decrease in the potential difference while assuming the current remained constant. Okay, so this is an incorrect approach that we wrote. Okay, so okay, fine. So we also have to write that the current increases. Yes, yes. But everything we wrote till now was correct, or? No, I don't think so. You get a full mark. They may give you a partial mark, 1 mark maybe. And so the current will increase in the circuit. Hence, the the voltage the voltage decreases. चलो. Okay. गुलमीना, जरा रीड कर लोगे प्लीज. सर वेव्स जो है थोड़ा वीक है क्योंकि हमारे मॉक में आ रहा नहीं है तो वो पास पेपर्स में स्किप कर रही हूँ वेव्स. इसके वेव्स के जी सर. क्यों भाई? जब सर मैं सर आवाज आ रही है. यस यस आ रही है. अच्छा, वो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मॉक में नहीं आ रहा and I'm trying to do a lot of past papers. तो ब्रो अब तो कर लो इसके मिला के. अब तो हो गए ना, मॉक्स हो गए. मॉक अभी होगा फिजिक्स का फिजिक्स ट्यूसडे का को. है. अच्छा, चलो फाइन. तो फिर एक काम करते हैं ना, यूसुफ यूसुफ जिंदा बैठे हो. यूसुफ से करवा दो. यूसुफ प्लीज रीड द क्वेश्चन. Okay, state two differences between progressive and stationary waves. That's Okay. right. Stationary waves have same phase difference, whereas progressive doesn't. And stationary waves doesn't transfer energy, but progressive does. It's getting चार पांच reason, right? जी, बेसिकली हम ये कहते हैं कि भाई उनका एम्पलीट्यूड, स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड वेरी करता है, प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड फिक्स होता है. स्टेशनरी वेव का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, प्रोग्रेसिव वेव का फेज डिफरेंस वेरी करता है. सही है. और आपके पास जो है एडजेसेंट पार्टिकल इन फेज होते हैं. सही है. ये वाली बात तो खैर हो जाएगी. और हम ये कहते हैं कि भाई एनर्जी ट्रांसफर होती है स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव में, स्टेशनरी वेव में नहीं होती. Uh, can you say that again once? Can you write all of them here? The reasons.
सही हो गया, तो हमने ये दो चीजें लिख ली हैं, सही, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? No. अच्छा, हम बस इसकी चेक कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट वर रिवॉर्डेड फॉर द डिफरेंस इन द टर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, फुल क्रेडिट वाज नॉट गिवन, were not often given. A large number of candidates describe the stationary wave in a vague term for of node and antinode or being formed by two waves. A majority of the candidates were able to describe the difference in term of amplitude or phase. Okay, there were some answers that only describe the property of one type of the wave with no reference to the second type. Okay, so you have to make the two references. Okay, okay, if this is happen in the stationary wave, then this doesn't happen in the progressive wave, or what happened in the progressive wave, you have to you also have to mention. Okay, so and there are only three things that you can write about the energy transfer, about the amplitude, and about the phase. Okay, these are the three things. Okay, that is acceptable. The rest of the things are not. Okay, fine. आगे आ जाओ. Okay. A source S of microwaves is placed in front of a metal reflector R as shown in figure 6.1. A microwave detector D is placed between R and S. Describe how stationary waves are formed between R and S. Mhm. Yes. Okay, so microwave S produces waves. Okay. With the incident waves hit the metal reflector, the metal reflector hits back with reflected rays. Then, as both of these are of the same type and are of the same speed Okay. and of the same phase difference, they Not have the phase superimpose difference. Superimpose, yes. oh, and they are coherent, so they form a stationary wave. Okay. अच्छा जी, so हम ये कह सकते हैं कि भाई um, wave from the source reflected from the wall, from the wall, सही है, the incident and reflected waves have same frequency, amplitude, and speed. And you also include and overlap. Okay. um, तो आप ही कह दोगे कि भाई um, producing either nodes or antinode या फिर producing stationary wave. Okay, इसको भी जरा हम एग्जामिनर रिपोर्ट से चेक कर लेते हैं that what kind of the answer they want. Majority of the candidate did not gain full credit for this part as the description given were in general term and not with reference to the apparatus in the question. Okay, weaker candidate refer to the source emitting sound wave or did not describe the origin of the wave that traveled to the reflector. Okay, so from the source. Okay, acha, a better answer would be microwave instead of wave from the microwave source instead of just writing source. But okay, due to the lack of the space I just wrote that thing. Okay, and reflect metal reflector R instead of reflected from the wall. This wall doesn't like earn you a mark, say from metal reflector, metal reflector. Okay, refer those thing that is given in the question. Okay, so an incident. Okay, fine, चलो आगे आ जाओ. Okay, how D is used to show that the stationary waves are formed between R and S. Between R and S. Okay. Okay, so at the points, you can use this by seeing where there are nodes and where there are antinodes. Like when the meter will go down, it will be a node and will come back to its original position, it will be an antinode. उल्टा नहीं बोल It will रहे. be a node, but come back to its original, and when it becomes an antinode, it will move, will reflect. But you have to move this detector for that. Okay, समझ रहे हो ना? You have Yeah, to it mention moves. that as well. Yes. Okay, so हम ये कह सकते हैं कि भाई move D
right and left, right and left. Okay, पहली चीज move D right and left and um अच्छा जी and um the deflection of the needle shows the nodes and antinodes. सही है या फिर maximum velocity and minimum velocity सही है. अच्छा जी एंड अच्छा इसकी भी देख लेते हैं इसका भी एग्जामिनर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं. The movement of the detector in the correct direction to observe the maximum and minimum deflection on the meter was described by only a small minority of the candidate. Many candidates did not describe moving the detector. Okay, moving the detector is necessary, right? So the detection of the stationary wave was often incorrectly described in terms of the reading on the meter oscillating where the incident and then the reflected wave passes the detector. Okay, many candidates said that the meter would not show any deflection when the stationary wave are formed. Okay, deflection would often describe in terms of nodes and antinode being seen rather than observe on the. Okay, fine. So it's better for me for my answer to include the movement rather than saying the node and the anti-node because they're saying how it used to. So you have to say or you have to mention the description of the observation. Okay, so then it'll show um, um, the maximum deflection, and the minimum deflection. Okay, चलो भाई आगे आ जाओ. How the wavelength may be of the microwaves may be determined using the apparatus in figure 6.1. Okay, so when the maximum deflection is showed, just go to the next adjacent maximum deflection Mhm. and measure the length of the space between those two adjacent maximum deflections. That will Okay. be your wavelength. Wait, times it by 2. That will be your wavelength. Oh, thanks, sorry, that was better Okay. because anti-node, sorry. हाँ जी. So you can say that okay, um, move the D between अच्छा पहले हम इसको और अच्छा कर सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि भाई adjust the D to get the maximum deflection. सही है. Then move it either side to get the maxima again right. फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि भाई um, measure the read measure the distance and times it by 2 for the wavelength. Okay, एंड इसको भी ज़रा जल्दी से हम एक वो कर लें. So many answers were not precise enough to gain credit. These answers did not describe the measurement of the distance between adjacent node or antinode. The distance from one node to another node is not precise. Okay, fine. Enough to suggest how the wavelength can be determined from this method. The distance to be measured in some way in the only distance between the successive node or antinode or number of successive nodes and antinode can be properly related to the wavelength. Okay, so you have to relate it like you have to add the factor of 2 if you are if you are taking the distance between the node and an antinode, so you have to times it by 4. So yep. So okay. Can you the answer again? Sorry, Can you the answer once again, what you wrote? answer पे. जो आपने लिखा है बता सकते हैं एक बार ये उसमें ये कुछ चीज
सही हो गया? जी। ओके, खैर चलो आज भाई आखिरी पार्ट है। सो वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव इज दिस मच। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हो इसमें? V इक्वल्स टू एफ लैम्डा। Okay, the wavelength of microwave is 2.8 centimeters, so it is V is equals to F lambda. V आपके पास 16 to 10 to the power 80 और नो is गुड, क्योंकि माइक्रोवेव है, एंड डिवाइड बाय 2.8 एक्सपोनेंट 10 to नेगेटिव the power 2। minus 3. सही हो गया, कितना हो So जाएगा? you get 2.8 in 10 to the power minus 2. You get 1.07 in 10 to the power 10. Okay, 1.1 exponent 10. Okay, so they're asking in gigahertz. So So 110 you 1 10 into 10 to the power 9. हो जाएगा। सही हो गया, चलो। ओके। सर, हाँ हाँ। मैंने अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो सारी बनानी आई है? नीड टू गो। ओके ओके, बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा भी, 2 मिनट में हम एंड करने लगे। वैसे देख लो, अगर जान चाहिए जा सकती हो। ठीक है सर, क्योंकि पप्पू बुला रही है। बस सही सही, देख लो देख लो। सर, मैंने अभी तक जितना था वो मैंने कॉपी डाउन की है, मैं साथ साथ अपने आईपैड पे कर रही थी। तो सही है। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्व वर्जन भेज सकते हैं प्लीज? ओके, डन। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज हाफिज। अच्छा जी, आज बस ये लास्ट पार्ट है इसका, एक ही चीज़ है। इन्होंने आपको यूरेनियम दिया हुआ है एंड न्यूट्रॉन है। ओके फाइन, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द यूरेनियम। particles of the uranium 235 nucleus. Okay, proton neutron बताने. So proton is 92, a neutron is 143, right? So A is so N is the neutron, A should be 1, B is 0, Then B 0 जाएगा। electron का नहीं बोलना, क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन का नहीं बोलना इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन, आई डोंट थिंक सो। वैसे उसके बगैर भी काम हो जाना चाहिए। लेट्स सी। नहीं, हो जाएगा, काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मेनली वहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं वेयर देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज, राइट? तो तब इन्वॉल्व, तब आपको लिखना होता है, सही। अच्छा, सी इज समथिंग। अच्छा जी, अब आप देख लो सी क्या हो सकता है। सो 235 प्लस 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 93 प्लस सी प्लस 2। ओके, सो कितना आ जाएगा भाई? 236 माइनस 95 gives you how much? It gives 236 you 141. 141। ओके फाइन। और डी अगर हमने निकालना है सो हमारे पास आ जाएगा Okay, then 92 प्लस 0, सो वो 92 ही रहेगा, equals to 37 plus d, or that's it, plus d, and the b is 0, right? So 92 plus minus 37, that's how much? 55. 55. 55। okay, सही है। न्यूक्लियर एनर्जी होगी ना, आई गेस। क्या है? this is the possible form of the energy released in this reaction। नहीं, जो एनर्जी होती है वो गामा रेडिएशन और काइनेटिक एनर्जी होती है, ये दो होती हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड। ओके, काइनेटिक एनर्जी और गामा रेडिएशन ये दो निकलती हैं, सही है। तो बस गामा टाइम दोनों लिख दो। देखो बेसिकली this energy is gamma, right? And since the product start moving after the reaction, so they have the kinetic energy, right? So ये आपके पास दो चीजें होती हैं, ओह, सही। So kinetic energy ये आपके पास है प्रोडक्ट की, राइट? प्रोडक्ट की। और गामा रेडिएशन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में निकली, सही है। और गामा रेडिएशन, ओके। अच्छा जी। अच्छा, ऑल्दो दिस लास्ट पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस एनीमोर, ये A2 के अंदर बाय द वे है, सही है। इसके अंदर इन्होंने कहा एक्सप्लेन यूजिंग द लॉ ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन हाउ द एनर्जी इज रिलीज इन दिस रिएक्शन। ओके, सो हम इसके अंदर कहते हैं कि भाई द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, इज ग्रेटर देन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सो इसका मास जो है वो ग्रेटर है, सही है। सो इसका मास ग्रेटर है एंड इसका मास स्मॉलर है, राइट? इसका मास स्मॉलर है, राइट? बट हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मास और एनर्जी इक्वल है, राइट? तो डिफरेंस इन मास जो होता है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट? सो ये जो स्मॉलर मास है ना, एंड ये जो एनर्जी आ रही है, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन मास। ओके, सो ये कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर, एंड दैट इज वाई यू हैव एनर्जी रिलीज। ओके, सो आप ये कह सकते हो कि भाई
ये चलो बस मैं बता देता हूँ कि भाई एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द ओवरऑल मास ऑफ द प्रोडक्ट, एंड द डिफरेंस इन मास प्रोड्यूसेस द एनर्जी, राइट, और कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, राइट। बट ये अब A2 के अंदर आ गया कॉन्सेप्ट, सो मास डिफेक्ट का, तो अब हम इसको वहां पे देखेंगे, सही है। चलो बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। एंड अच्छा, काइंडली काइंडली अटेम्प्ट इसका 21 वेरिएंट प्लीज, ओके। ट्राई मई जून 15-21 एट होम, एंड इंशाल्लाह टुमारो हम अक्टूबर नवंबर करेंगे, सही हो गया। चले जी, चले, Love ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। Love. अल्लाह हाफिज़।